In Gilgit-Baltistan, hope wanes under the weight of an unjust regime. Residents witness a systematic exploitation of their resources, and taxation, imposed without a voice in governance, amplifies their sense of alienation. Environmental anxieties add another layer to their discontent. Locals fear not just displacement but also the irreversible damage of their fragile ecosystems, which sustain their way of life. The protests echoing through Gilgit-Baltistan's valleys and peaks are not just merely about immediate grievances, they are a collective cry for dignity. A report. Gilgit-Baltistan has been illegally occupied by Islamabad for more than 7 decades. Residents of this region have endured the worst of Pakistan's political and economic hardships for many years. People complain that successive administrations in Gilgit-Baltistan have failed to address even the most basic necessities. Unfair taxation, an unprecedented increase in the price of food items, and regular power cuts have perturbed the locals. They blame Pakistan and its stooge administration for looting the vital resources of the region. हमारे पानी से पूरा पाकिस्तान सरायाब हो रहा है सर। हमारा पानी सारा पाकिस्तान में जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली का है ही नहीं, सिरे से नहीं है बिजली। कहीं डैम लगाते किधर जाता है पता नहीं है बिजली। पहले कहते थे गुरु आ गया बिजली का लोड शेडिंग खत्म होगा, नल तर आ गया, 14 आ गया, 14 के बाद 20 आ गया, अभी क्या कब्रिस्तान आएगा इधर? क्या करेंगे सर? बिजली ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। The residents say the incumbent Chief Minister, Gulbar Khan, has done nothing to improve their lives. For decades, the living conditions in Gilgit-Baltistan have deteriorated. They reckon they have seen no development in the region during Gulbar Khan's regime. The skyrocketing inflation and rising electricity bills have broken their backs. अभी तक तो हाजी गुलबर साहब की कोई कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट काम हो नहीं रहा है। इसलिए कि सीएम साहब उसकी पता नहीं सेहत भी अच्छी नहीं है, वो इधर बैठता है नहीं बैठता है ये भी हमें पता नहीं होता है। कि एक वज़ीर आला को तो हर वक्त जनाब अपने ऑफिस में बैठना चाहे, आवाम के मसाइल हल करना चाहे, वो तो पूरे जीबी का चीफ मिनिस्टर है। तो इस वक्त जीबी की हालत ये है कि बस सब कुछ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई मतलब उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है। Despite continuous protests throughout Gilgit-Baltistan against inflation, electricity bills and numerous other issues in the last year, the locals got no reprieve. Often treated as second-class citizens, the residents of Gilgit-Baltistan have no representation in the political and bureaucratic processes in their own land. इनका कोई कारकर्दगी नहीं है अभी तक। देखा जाए तो लाइट का इशू आपको पता है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, अभी तक लाइट का नाम और निशान नहीं है। 24 घंटे में से 23 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम तबाह है, स्कूलों में पूछने वाला कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को आए रोज़ तब्दील किया जा रहा है और इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है। इसी वजह से ये आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे आए हैं, तो ये बस अपने मज़े में लगे हुए हैं। आज रेट तो कुछ और रहता है, कल को रोज और होता है। हर दिन रेट में फ़र्क पड़ता है। आज जाते सामान लेते हैं तो कल उसका रेट कुछ और होता है। हर दिन बे दिन बढ़ाते हैं और कम करता नहीं, 1 रुपये सस्ता किया 10 महंगा करते हैं। Their hopes and aspirations of a better life have died down under the illegitimate and draconian regime of Pakistan. The residents have realized well that the successive administrations in Gilgit-Baltistan are deployed to siphon off their natural resources and destroy even the basic urge to live in their own territory. Locals are angry over the fact that Pakistani government is imposing taxes on them without providing them with adequate representation in the country's legislative bodies. They argue
that since Gilgit-Baltistan lacks full constitutional rights and representation in Pakistan's parliament, they should not be subjected to taxation without proper representation. Additionally, there have been protests related to environmental issues such as concerns about the impact of infrastructure projects on the region's natural resources and ecosystems. The protests in Gilgit-Baltistan reflect the aspirations of its residents for greater autonomy, representation, and respect for their rights.